So then how did the idea of stable money, so did you guys decide कि अच्छा हाँ हम लोग मिलके कुछ करते हैं? Towards the end of 22, September 22, I was on my path. So there was some financial number in my mind that I had to hit before I start off. And Saurabh also, I think 2-3 months prior to that, had left his job, also was on his journey. But हमने कभी सोचा नहीं कि साथ में करना है. One night, Saurabh just pings me 10:30-11 o'clock. यार startup साथ में करना है क्या? My journey was to wait for 6 months, hit that number and then start. But ऐसा लगा कि यार getting the right co-founder to start बड़ा बात something है हाँ मतलब so you are is very important. not just about the right co-founder, he was working at Navi before this, right? Yeah, so he was the CEO of Navi AMC, and then we started discussing Saurabh's investments. Then we deep dived into it कि यार ये क्यों गलत इन्वेस्टमेंट है, कि इस पे आपको GST लगता है, आपको गोल्ड प्राइस पे भी स्प्रेड दे रहे हो, and how there are other investment options like a sovereign gold bond which is much more efficient. We felt like this was a huge problem statement to solve. How do you improve the returns on such a large portion lying in the banks? Hello everyone and welcome to another episode of Desi Fire podcast. I'm your host Ravi Handa, and on this channel we talk about financial independence and early retirement. And a big part of your early retirement is that you need to keep your money safe. You need to keep your money stable. And for that, today we have Harish Reddy with us, who is the co-founder of Stable Money. Welcome, Harish. Welcome to the show. Thanks a lot, Ravi. Thanks a lot for having me on this podcast. So, Harish has done his studies from IIT Bombay. He has worked with ST for a long period. And then he started Stable Money with Saurabh. Saurabh was with you at IIT Bombay? Or Yeah. How did you meet him? Saurabh and I are friends from IIT Bombay. So in IIT Bombay, we do this event called TechFest, where Saurabh and I were managers and therefore have known. TechFest. What was the Bombay TechFest called? It's called TechFest. Not Mudai. Muda is the cult fest. अच्छा Mudai cult वाला था. Yeah. I remember that. So TechFest में हम दोनों managers थे, so we know each other from the last 17-18 years. And Saurabh and मेरा college में भी एक startup था together in EdTech called Edgeways. This was in 2009, where we used to collaborate with JE coaching institutes to develop video lectures, test series, etc. I think हमारा claim to fame was that one of my juniors in TechFest, one of the coordinators, was an AIR rank 1. तो हमने उसको hire कर लिया. And we said कि we'll sell on this. तो बॉम्बे में तो AIR 1 मिल ही जाएगा. बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, तीसरी जगह तो कोई जाएगा नहीं. So we sold heavily on that. I think we made decent money. I think for that time we made like 5-6 lakhs in 3-4 months. We've spent it and moved on, which in hindsight has not been a great decision looking at how the other edtechs have worked out. But yeah. Well, man, so getting money early. I remember. So I did my dual degree. So we used to get a stipend in college. Yeah. Which was maybe 5,000 rupees a month or 6,000 rupees a month. Yeah. This is early 2000. 5,000 रुपए में तो भैया हम लोग राजा हो जाते थे हॉस्टल के. So, but then you and Saurabh worked in various other places. Yeah. So there again, Saurabh and I also had our first job together, जो हम दोनों छुपाते LinkedIn पे because we are not very proud of what we did in the first job. I think the both of us were manual traders for 6-7 months. I think we hated the way we were treated at job. Typically how the job was 14-15 hours spending every day, not getting a lot of respect, etc. So हम बहुत जल्दी भाग गए. So that is something that we hide maybe for the first time and giving this information out. So that's how we know each other. After that, I've gone into my hedge fund industry. I've been doing algo trading since then. And Saurabh, as we all know, has been in B2C with Swiggy, Navi. So then how did the idea of stable money? So did you guys decide कि अच्छा हाँ हम लोग मिलके कुछ करते हैं? Or did you decide कि तुमको idea है कि हाँ यार इसके लिए कुछ बनाना चाहिए, and then you reached out to Saurabh because he worked in that space? How did this happen? So towards the end of 22, September 22, I was on my path. So there was some financial number in my mind that I had to hit before I start up. And Saurabh also, I think 2-3 months prior to that, had left his job, also was on his journey. But हमने कभी सोचा नहीं कि साथ में करना है. And one night,
Saurabh just pings me 10:30, 11 o'clock. Yeah, startup साथ में करना है क्या? उस time पे I was again in the algo trading industry where you do very little work and make a lot more money. So I was sleeping at 10:30. The next day morning 7 o'clock I wake up, see the message and think about it. कि यार my journey was to wait for 6 months, hit that number and then start. But ऐसा लगा कि यार getting the right co-founder to start something is very important. तो लगा कि चलो यार 6 महीने का hit ले लेते पैसों का. And it's not just about the right co-founder. He was working at Navi before this, right? Yeah, so he was the CEO of Navi AMC. But he'd left that towards I think June or something, or maybe May, June. So he was I think 3 महीने से वो research ही कर रहा था कि क्या करना चाहिए. So the first thing that we decided कि साथ में कुछ करेंगे. कि चलो we have a repo. I'm like यार तू आ जा इधर. Let's decide. So both of you were in Bangalore? No, I was in Delhi. He was in... I was in Noida. He was in Bangalore. Okay. So that weekend Saurabh flew to Noida. फिर उसके बाद फिर हम ऐसे ही पुरानी बातें ये सब कर रहे थे. We did not have an idea. चलो शुरू करते. And then we started discussing Saurabh's investments. Then yeah, Saurabh was investing in one of the electronic gold, digital gold products. Then we deep dived into it कि यार ये क्यों गलत इन्वेस्टमेंट है कि इस पे आपको जीएसटी लगता है, आपको गोल्ड प्राइस पे भी स्प्रेड दे रहे हो, and how there are other investment options like a sovereign gold bond which is much more efficient. Then we realized कि यार Saurabh and I are... Which was much more efficient. Which was much more efficient. Which unfortunately. Do you have any hope of it coming back? No. I think the last nail in the coffin was the reduction of import duty, and the noise suggests that it was done to save the government's outgo. I don't agree with that noise, to be really honest. So for our users who don't really have context, sovereign gold bonds was a product that was issued by the Reserve Bank of India. It used to give you two great features above anyone else. One, you used to get 2.5% interest every year, over and above whatever is the gain or the loss in the gold price. Second, if you held those bonds till the end, till the maturity, you had to pay no capital gain taxes. Probably the only product where you are not paying any taxes on gold, or for that matter, any investment. This year, what has happened is, typically they used to issue 4 bonds in a year, 6 bonds in a year. No bonds have been issued in 2024. So that was my question to him, that do you think that they'll come back? But he says they won't. And one of the reasons is this year, the duty on gold import has been reduced. And this is also the year, which is a coincidence in my opinion, this is also the year RBI has to pay back on those bonds. So there is some criticism in the market that the policy has been changed so that the outflow for, so that the gold prices crash, and the outflow for RBI is a little bit lesser. I don't believe that. This is much more important as a policy than a few thousand crores, which the RBI would be able to save. But I do agree strongly with Harish that it's extremely unlikely that sovereign gold bonds are going to come back. And unfortunately, in the last 5 years, the gold prices have risen so much. So maybe the government's calculations also have gone haywire in terms of the outgo. So yeah. For those who've invested in sovereign, sorry for the detour, but I think you need to hold on to this. This has been the best investment product to come out of the country in the last 10-15 years. Yeah. So like you have, so please. Yes, I wanted to have more. So my plan was that every time they get issued, I'll keep buying. But unfortunately, the issues have stopped. So yeah, so you looked at his portfolio. So we discussed this at length, and then it was like Saurabh and I have been in this industry. We know so much about the taxation, about the products out there, and even we were unable to get to the optimal investment. And we started looking at other products where people are not very efficient at investing. What struck us was the amount lying in deposits, both savings account and FDs. At that point in time, it was 50 lakh crores in fixed deposits, 50 lakh crores in savings accounts. And majority of the banks were giving you like 6.5% kind of rates. And the thought in our mind, and 6.5%, mind you, at the income tax slab. That post-tax for most people, it will come down to maybe 4.5%. It was a 4.5% kind of a product, and large majority of Indians were doing this.
we felt like this was a huge problem statement to solve. How do you improve the returns on such a large portion, lying in the banks, and also which impacts a very large audience? And looking at the interventions, looking at the products that have come up in the market, most of it have been towards the equity side. There was no significant disruption in the fixed income space. So it seemed like a good opportunity. And 2022, if you remember, was also the time of high inflation. Therefore, interest rates rising. It felt like the next 3-4 years are going to be good for this kind of a product to be built. So yeah, so a combination of opportunistic bet plus some personal pain is what led to stable money. There were a few iterations, of course, talking to the investors, etc. But that's a natural. And since both Saurabh and you have worked in the financial space for a very long time, so you were before this you have spent a long time at ST, I believe. Can you tell us a little bit more about that? What you did there? So after my first job, which was as a manual trader, I joined ST. ST was perhaps India's first algo trading entity. This was started in 2009. We used to write algorithms for high frequency trading on NSE and BSE. That was the basic job description. And there was no talent coming from abroad to India for HFT. So you figure out yourself. There's nobody to guide you. So you go look at the data, try to find some statistical correlations and figure out the strategy. So that was the JD. I started with something called as market making. Market making is where you provide liquidity to the market. मतलब आप let's say Reliance 1000 रुपए का चल रहा है, आप 1000 रुपए एक पे एक सेल कोड डालोगे, 999 पे एक बाई कोड डालोगे, एंड कुछ हिट हो जाएगा, एंड दी होप इज दैट किसी को अग्रेसिवली बाय करना है तो 1000 पे 1001 पे खरीद लेगा बाय हिटिंग एन अग्रेसिव ऑर्डर, एंड द मार्केट विल कम बैक 2000, and you do lakhs of such trades in a day and make 50 paisa each trade, and therefore make 5-6 lakhs. This was the JD. Of course, that has gone into a much more specialized field after that. But I basically did this prop trading for ST for 8-9 years. Their book has grown from, I think when I joined, it was a 15-20 crore book with a 100% kind of returns annually, to it has grown to a 150-160 crore kind of book and a 30-40% returns eventually when I left. So this was what I did at ST. One of my close friends actually joined ST around the time you left, Vivek Sharma करके. तो मैं बोलता रहता हूँ उसको कि भाई कर लेते हैं पॉडकास्ट, और मेरे को टालता रहता है कि नहीं यार तुम कहाँ 10,000 सब्सक्राइबर वालों के साथ में मैं नहीं करता हूँ, बड़े लोगों के साथ में करता हूँ. तो देख ले विवेक, अगर हरीश आके कर सकता है तो तुम भी आके कर सकता है. आई होप ही अग्रीज. So, did you meet Vivek while he was there? I think around the time you left. Incidentally, I definitely took Vivek's interview. Like I had a big role in you joining ST, so you must give credit for me for that. And also, I think my last project was to help Vivek set up something. I don't remember what exactly that is, but yeah, the last thing that I did at ST was to help Vivek. And I've been in touch with Vivek. उसके बाद कुछ चीजें करने के लिए. Fair. And I think the founder of ST, Sandeep sir is an investor in stable money as well. Yeah. So Sandeep Tyagi, who's before ST, he's founded Inductis. Inductis was sold to EXL. Then he's made a lot of money and started ST. It was a great experience working with him. As I told you, the first job for both Saurabh and me was not really great, and we were scrambling to look out, and Saurabh had suggested me ST advisors कि यार ऐसा कुछ है तो apply करके देख, and through Saurabh I joined ST, and the refreshing change was the way employees are treated there. मतलब हम I think 15 साल पहले there was a very unequal relationship between a new joinee and the CEO founder, right? And that was true for my first job as well. But यहाँ पर the first time I met Sandeep, maybe three days into the job, he treated me as an equal. It was such a refreshing change. And 3 months into the job, I could vocally disagree with Sandeep on a lot of things that we were building. And him giving that space was so important and has helped me so much in that. वो बहुत जरूरी है यार भाई, because there are bad bosses everywhere. And as much as if anyone जो तुम बोल रहे हो कि तुमने तो 6 महीने में छोड़ छाड़ के निकल गए, not a very wise decision in most cases, until and unless तुम्हारे पास में थोड़ा सा पैसा तब तक पड़ा हो.
And I do believe that is why, when I talk to especially 25-year-olds these days, the first thing that you do is you build a little bit of an emergency fund, so to say, so that you have some money as a backup in case you want to walk out of a bad situation. And that is where I would want your input. कि ये जो इमरजेंसी फंड का पैसा है, अब मतलब मैं नहीं बोलूंगा किसी को कि अच्छा हाँ तुम वो अपनी एल्गो ट्रेडिंग के अंदर उसको लगा दो या बट व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इमरजेंसी फंड का पैसे को मैं कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं? I'll just go back a couple of steps and tell you the 4-5 things that you need to do before start thinking of building a portfolio, right? तो 4 चीजें करना है. एक, you buy a health insurance. दूसरा, you buy a term insurance. तीसरा, you formalize your financial investing, both loans and investments. चौथा is an emergency fund. Health insurance and life insurance is an obvious thing to do because आप कहीं invest कर रहे हो और suddenly आपको कुछ हो जाता है and you tap into that investment. I think the best thing that you need to do for your investment to grow is not touch it. And to afford the luxury of doing that, you need to do these 4 things. The third thing that I say is formalization is so important. I'll give you my personal example. 2010, I joined ST. 2012, end of 12 or maybe 13 was when I started making my first crore. 3 years into the college, that was a big thing at that point in time. Until 2020 or 21, I did not have an emergency fund because my family was stuck under the debt trap of informal debt, where you pay 2.5-3%. You are paying 40%. 2% महीने का वो जो हाँ, तो मतलब आप 30-35% तो दे रहे हो, तो you cannot even think of anything else. And ये सिर्फ जो पैसा ले रहे हैं उसके लिए नहीं, जो पैसा दे रहे हैं उसके लिए भी. There is no guarantee that your money comes back. अभी बहुत लोग यही बोलते हैं कि यार मेरा दोस्त 2% दे रहा है, मैं पैसा वहां लगाता हूँ, मैं क्यों 9% के FD में लगाऊं? यार आप 24% पे दे रहे हो, 20% चांस है कि वो बंदा ना दे पैसा. 20% is a conservative estimate. Right? So your effective return is 4% unless you are a gunda who can go and extract that money out. So formalization is very, very important. And then comes the emergency fund piece. Your emergency fund is your safety net. Both कि आपके employment में, आपके business में अगर कुछ हो जाए, there is a temporary hiccup, then how do you handle it for the next 4-6 months? Or you have an unforeseen emergency. यार पेरेंट्स को सडनली पैसों की जरूरत पड़ गई, आपका कुछ घर पे कुछ हो गया, सडनली यू नीड टू रिपेयर द होम एटसेट्रा. हाउ डू यू हैव दैट सेफ्टी नेट सो दैट यू डोंट टैप इनटू द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज योर इमरजेंसी फंड. And this is not just a financial safety net, this is also a psychological safety net. A huge psychological safety net. यार बहुत बार तो होता है ना, even if you are in an uncomfortable position, you cannot walk out कि अगले महीने का भाड़ा कहाँ से दूंगा मैं. Correct. आप अगर next month आप खर्चा कैसे चलाओगे आपको पता नहीं है, you can't be bold in your decisions. आपको सैलरी जाके negotiate करनी भी है, आप नहीं कर पाओगे. यार बोलेगा there is 1% chance कि बोलेगा निकल जाओ. What will you do? आप let's say you're running a business, let's say and you are negotiating a contract. अगर आपको पता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं नेक्स्ट मंथ नहीं निकलेगा, यू कांट गेट योर फेयर प्राइस. सो इमरजेंसी फंड इज इंपॉर्टेंट इसीलिए. एंड फीचर्स ऑफ इमरजेंसी फंड 2 ही है. एक, इमरजेंसी फंड को आप ऐसा सोचो, दिस मनी लाइंग इन योर बैक पॉकेट, सो इट शुड बी वेरी वेरी इजी टू एक्सेस, सो इट शुड बी एक्सट्रीमली लिक्विड. बी, इमरजेंसी फंड शुड नॉट गो डाउन इन वैल्यू, इट कैन नॉट बी वोलेटाइल. तो इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने इमरजेंसी फंड मार्केट्स में डाला, something like COVID happens, March 2020 you're sitting, आपने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया, मार्केट आधा गिर गया, आपका इमरजेंसी फंड 3 महीने का रहेगा. सो इट हैज टू बी वेरी लिक्विड. एंड इंडिया में आई थिंक मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, द हाईएस्ट लिक्विड एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स अगर चाहिए तो आपको बैंक्स के पास जाना पड़ेगा, वेयर यू हैव बोथ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स एज द ऑप्शंस. Savings accounts unfortunately do not give you a lot of returns, 4-5%. The best banks give you 4-4.5%. So FDs is a very good option to park your emergency fund in. You can consider stable money for that. 8.5-9% पे आप डालते रहो. आपको कभी इमरजेंसी आ भी गई तो there is a one click button जहाँ पर instantly पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, and then you can address the emergency and then you can restart this cycle. Fair. So for users who are listening, there is, जहां तक लिक्विडिटी की बात है, आई फुली अग्री दैट द सेविंग्स वुड बी अ बेटर आइडिया. पर्सनली स्पीकिंग, इमरजेंसी फंड के लिए मेरे को एफडी इसलिए बेटर लगता है
कि अब तो मैं समझदार, आई एम 40 नाउ सो आई नो, बट एट 25 अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता था, चाहे वो किसी का भी हो कि अच्छा हाँ चल कुछ ऑप्शन आ रहा है तो यार दोस्तों के पैसा इकट्ठा हो गया, तो इट गेट्स स्पेंट वेरी इजीली. एफडी है तो एक वो साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है कि मेरे को अपनी एफडी जो है वो तोड़नी पड़ेगी, तभी मैं उसको करूंगा. तो मैं उसको रैंडम चीजों पे स्पेंड नहीं कर दूंगा. सेविंग्स अकाउंट में रहेगा. यस, द couple of extra percentage points, that is a factor, but मैं इमरजेंसी फंड में रिटर्न का इज नॉट माय प्रायोरिटी. सो दैट्स व्हाई आई डू बिलीव एफडीज वर्क बेटर. एंड इफ एनी ऑफ यू वांट टू चेक आउट द स्टेबल मनी ऐप, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है. यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम दैट. So this is one part of it, savings and FDs. There are plenty of other fixed income options which have come up, and I believe you guys also have plans for those corporate bonds and all that. So can you tell us about the fixed income products that you guys are working on and have plans of launching? Yeah. So we are about to launch our corporate bonds piece. We are a registered stockbroker. We will have our online bond platform to be launched, which is a framework given out by SEBI towards the end of 2022. So we'll be launching that soon. But I go back to the genesis behind this. As we said, the use case behind starting stable money was to move a lot of Indians who were earning subpar returns. Ki, yaar, aap 6% return kama rahe on your investments. How do we move them to a higher return journey? So the first thing that we did was an FD with a big bank at a 6.5%. So I'll begin with the genesis of stable money. I think when we started stable money, our intent was that there's a large number of people, of Indians, who are earning only 6.5% on their financial portfolio. उसको हम कैसे ऊपर ले जाए? That was the objective. So the first thing that we did is, यार आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, we are getting you banks which offer higher interest rate. 6% की जगह आप 9% पे. Now stable money will have a couple of banks which will offer you 9% for general citizens like you and me, and 9.5% for senior citizens. And this we've done without taking additional risk, because you have an insurance of the RBI through DICGC, which we'll talk in detail maybe sometime down the line. So wo kiya, the first thing is more returns with no risk. The second thing that we want to do is higher returns with low risk. So अगर आपको एक जर्नी ले जाना है फ्रॉम 6% FD प्रोडक्ट टू 13-14% इक्विटी, अभी इंडिया में बस दो ही कैटेगरीज है, कोई या तो 6% में डालता है, 14% में डालता है. हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप? उसके लिए बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज अ वेरी क्रिटिकल पीस टू डू दैट. सो द इंटेंट बिहाइंड लॉन्चिंग इट इज कि हम 9 से 11% के बॉन्ड्स कैसे लाए, बट स्टेबल मनी बीइंग व्हाट इट इज, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग, लोगों का ये एसोसिएशन है कि स्टेबल मनी मीन्स एब्सोल्युटली सेफ मनी. सो वी कैन नॉट लिस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन आवर बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म. So we need to be extremely careful about what bonds we get to the platform. तो हम एक क्यूरेटेड मार्केटप्लेस लाने वाले हैं जहां पर हमारा एक रिस्क टीम होगा जो हर बॉन्ड को वेट करेगा, देखेगा कि इसका डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांस है कि ये बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाए एंड आपके पैसे वापस नहीं आए. एंड वो चांस जब वेरी क्लोज टू जीरो है, ओनली ऐसे बॉन्ड्स हम लेके आएंगे, राइट? एंड हमारे यूजर्स को भी सजेस्ट करेंगे आप 100% पैसा मत डालिए, आप अपना 20%, 30%, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो डाल के देखिए, एंड जस्ट see how your return goes up. And once you start getting comfortable with it is when you move more of your capital. So that's the intent behind it. So it will launch in October. We're excited about this. There are a couple of things that don't typically happen in the corporate bonds market in the country. Awareness बहुत कम है, लोगों को FD के बारे में बहुत आसानी से पता है, they know the nuances of FDs. But bonds का किसी को पता नहीं. It's a very complicated instrument. Stable money, we will try to draw parallels between FDs and bonds and try to make that be understood to users in very very simple terms. The second thing is liquidity. जैसे हमने अभी बात की emergency fund में liquidity की बहुत is a very critical part. All the online bond platforms in the country do not have a liquidity window or a liquidity option जहाँ पर आपने bond खरीदा, कभी भी चाहिए तो जाके बेच सकते हो. That is something that we would be working on, and we will get that maybe 3-4 months down the launch. We'll have completely liquid bonds where you can buy, sell, make higher returns than FDs with a very good risk rating. Okay.
I think RBI के जो bonds are, I might be completely wrong about this because I don't really know much about this space. RBI के bonds भी तो आप खरीद के बेच सकते हो ना as of now? Yes. So you can, but even corporate bonds you can buy and sell. But there is no buyer out in the market. आप exchange में अगर let's say मुथूट फाइनेंस का आपने बॉन्ड खरीदा एट पब्लिक लिस्टिंग 100 रुपए पे खरीदा, आप एक्सचेंज में बेचने जाओगे ना 90 रुपए पे बायर होगा, 110 रुपए पे सेलर होगा, तो आपका जो पूरा रिटर्न है एक बेचने पे निकल जाएगा. सो अगेन मार्केट मेकिंग जो मेरा फर्स्ट जॉब था, आई वांट टू डू दैट हियर कि हाउ डू आई गेट स्टेबल मनी टू सिट एट 99 as the buyer and 101 as the seller, so that it becomes easier for you to sell. Fair. So I'd like to pick on something that you said ki once they build confidence they would allocate a higher amount and a higher percentage to these sort of products. That brings me to the next idea ki, and I do genuinely believe कि आपको वो डेट वाले पार्ट का, या डेट की तो एक तो रीब्रांडिंग बहुत बढ़िया कर दी है जिसने भी किया. आई डोंट नो हु केम अप विद द आइडिया कि इसको डेट बोलना बंद करो और इसको फिक्स्ड इनकम बोलना चालू करो. दैट्स अ ब्रिलियंट स्टेप. आई डोंट नो हु डिड दैट, बट आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम आपका होना तो चाहिए. आप बात कर रहे हो कि उसको इंक्रीज करो एंड ऑल दैट. हाउ डू आई डिसाइड कि यार मैं 20% रखूं कि मैं 80% रखूं? ऑब्वियसली सबके लिए आंसर वो डिफरेंट होगा, बट हाउ डू आई थिंक अबाउट एसेट एलोकेशन? So again, before you start building a portfolio, do those 4 things. हाँ, वो तो है. Life, term, medical, informal. अब आपके पोर्टफोलियो में 2 पार्ट्स होते हैं, मेजरली 2 पार्ट्स. I'll maybe include gold in the fixed income piece only. Gold and equity, fixed income and equity. तो equity का रोल और परफॉर्मेंस ये है कि equity will go in line with the nominal GDP of the country. तो इंडिया का nominal GDP grows at maybe 13%, equity will grow at 12% over the long term. बट विल हैव 30% स्विंग्स ऊपर नीचे. तो ऐसा हो सकता है कि आपने खरीदा 1 साल बाद 30% नीचे मिले, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट योर पोर्टफोलियो विल 10 साल में पिछले जो है ना, जो अभी पॉडकास्ट देख रहा है उसने देखा नहीं है वो पीरियड, वो देखा नहीं है, हम लोग झेले 2008 में. करेक्ट. हाँ, वो देखा नहीं किसी ने, बट वेरी हाई चांस स्टैटिस्टिकली देखोगे इन द लास्ट 50 इयर्स 1 साल बाद पोर्टफोलियो यहीं पर रहने का चांस, यहां से नीचे रहने का चांस इज 30-40-50%. राइट. बट आप 20 साल दोगे इक्विटी को तो देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप 11-12% पे होगे. तो इक्विटी इज योर फ्रेंड इन द लॉन्ग टर्म एंड वोलेटिलिटी इज योर एनिमी इन द शॉर्ट टर्म. अब फिक्स्ड इनकम के फायदे ये है कि एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी है कि यार इक्विटी की तरह नहीं है कि 30% ऊपर नीचे, मेरे को एग्जैक्टली पता है कब कितने पैसे आने वाला है. दूसरा फिक्स्ड इनकम का फायदा है कि यू कैन बी वेरी वेरी टैक्टिकल. टैक्टिकल का मतलब है कि आप अपना एलोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हो. अभी बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि यार मार्च 2020 निफ्टी का क्या लेवल था, 11,000 से 7,000 गया, तब पैसे डाल देना चाहिए था. कहां से डालोगे पैसे? यू विल ओनली, बिकॉज आपने सारे पैसे इक्विटी में डाल दिया, आधा हो गया, आप कहां से डालोगे? यू कांट टेक अ लोन एंड पुट मनी, राइट? फॉर यू टू बी एबल टू डू दीज थिंग्स यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी. एंड जब आपको लग रहा है कि यार मार्केट इज बीइंग वेरी इरेशनल, लेट मी पुट सम मनी फ्रॉम फिक्स्ड इनकम इनटू दिस. The third thing that this gives is stability to your portfolio. And what do you mean by stability? Yes, सबका एक रिस्क टॉलरेंस होता है कि आई कैनॉट सी माई पोर्टफोलियो फॉलिंग 50%. बोलने को कुछ भी बोल रहे आप, बिकॉज यू सी इन द लास्ट 3 years एंड बोले यार मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं 20 साल देखूंगा. बट वंस द मार्केट फॉल्स 20% यू विल पैनिक. एंड दिस वी हैव एविडेंस, क्योंकि मार्केट 50% तभी गिरेगा जब 20% गिरने पे बाकी लोग पैनिक किए और बेचे, तभी 50% पे आया ना. तो आपका टॉलरेंस क्या आपको पता होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये पता होता नहीं है. अ गुड बैरोमीटर फॉर दैट इज हाउ ऑफ्टन डू यू लुक एट योर पोर्टफोलियो. आप अगर हर रोज जीरोधा का ऐप या ग्रो का ऐप खोल के देख रहे हो कि यार मेरा पोर्टफोलियो कहाँ है, इट मीन्स जनरली यू हैव अ टेंडेंसी टू पैनिक मोर. ऐसा लोगों के लिए इट शुड बी अ हायर एलोकेशन, बिकॉज इवन दो मार्केट 50% गिरेगा, बिकॉज यू हैव 30% टू फिक्स्ड इनकम, 70% टू इक्विटी, मार्केट आपका 20% गिरेगा. सो दीज आर द न्यूआंसेस. अब how do you think of allocation? A general thumb rule is look at the goal that you are, building this portfolio for, and that goal generally सबको retirement ही होता है goal. And retirement is of different tenures for different people. मेरे लिए my retirement is 25 years. Down the line for you, maybe you are already there. And longer the duration for retirement, you can have a higher allocation towards this thing. बट उसमें भी कुछ न्यूआंसेस है. लेट्स से आपके पास 100 करोड़ है बाय सेलिंग योर स्टार्टअप. नाउ
आपको 5 करोड़ ही चाहिए रिटायरमेंट के लिए, then your goal is not retirement, your goal is for your children, which is 50 years down the line. तो मेरे पास में नहीं है वैसे, आसपास भी नहीं है उसके, बट आई एग्री कि हाँ, तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए करेक्ट. तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज look at your goal is, I think typically for people who come from middle class, maybe it is retirement. अगर आपके पास 20 साल है, a typical ratio would be 30% fixed income, 70%. आपके पास 10 साल है तो 50-50, आपके पास 5 साल है तो 70-30, but that it comes with a lot of nuance. So first understand what you need, and आपके पास 100 करोड़ है तो ये सब मत सोचो, 5 करोड़ रखो and 95 करोड़ इक्विटी में डालो, so that 3 generations down the line you are very big. तो तुम्हारा क्या है अभी? हाँ, तो और क्यों है, मतलब rather, so whatever number it is, and what's the logic behind it? Yeah. So to be honest, I started building my portfolio from 2021. As I told you, 2020 tak I was negative. So I only got 1.5-2 years of my job life to build a portfolio on. And I think I don't panic on risk. So therefore I could afford a higher allocation to equities. And see, I am saving for my retirement, which is 2025 years down the line. So as of now, I have 72% to equities, 21% to fixed income, 6% to gold, all through sovereign gold bond. Unfortunately, that has gone away. And in this 21%, around 9% was through debt mutual funds. At a time where taxation was beneficial, there was an indexation benefit, जिससे मेरे को लगा था कि मेरा tax outflow would be close to zero. Unfortunately, that's not the case now. Fixed deposits and index and the debt mutual funds are taxed on par. तो आज अगर मैं करता तो मैं 20% फिक्स डिपॉजिट में डालता, क्योंकि मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो 10% and 6% is how my portfolio is. Fair. And just for the audience, मैं अपना asset allocation कहीं करता हूँ कि भैया मेरा equity जो है वो 60 से 70 के बीच में रहना चाहिए. I don't really think, I think I'll be maybe around 65 right now, and I have done a complete video on how I'm managing it and how I'm deciding. मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है अपने पोर्टफोलियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so do check that out as well. Now, about these investments that you're talking about, कि अच्छा हाँ debt mutual funds हैं, so FDs अभी भी FDs तो होंगी? Yeah, FDs. 10% of my portfolio is FDs. 10% of your portfolio. ये कहाँ कैसे डाला है? So how are you using it? Multiple banks की एक बैंक के अंदर कर दिया, कैसे किया है? Okay, so and stable money use किया है या नहीं किया है उसके लिए? Absolutely, stable money use किया है. तो my tech team, whenever they integrate a new bank, they book at least 10 FDs of mine, because वो टेस्ट करते रहते हैं कि कैसे हो रहा है. तो on the face of it, I have like 100-150 FDs, because सब छोटे-छोटे ticket size के हैं. But typically what I tend to do is I invest up to 5 lakh rupees per bank. And we have 7 banks in the system right now. So 30-35 lakhs यही से cover हो जाता है. And there are a couple of banks with which I have a higher allocation. And the reason I do this, I think the first most important thing, the first FD जब मैं book कर रहा था, is the return. Look at the FD with the highest return. And 5 lakh तक इसीलिए जा रहा हूँ, because I have the DICGC insurance here. DICGC is a 100% fully owned subsidiary by the RBI. What this corporation does is हर बैंक से एक इंश्योरेंस का प्रीमियम लेता है. तो all the deposits that you put, banks उसके proportion में भी 1%, 0.5% of it इनको as an insurance premium देता है. And whenever the bank goes down, मतलब बैंक default हो गया, bank is not in a position to pay the depositors back, the DICGC company comes into the picture, takes from the bank the list of all the depositors, and from depositors will need to submit to the bank कि यार मेरे पैसे इस अकाउंट में भेज दो, because बैंक अकाउंट में तो डाल नहीं सकते अपना, you send it to a different account where your maybe HDFC, SBI को जो भी अकाउंट है, and within 2 months 5 लाख तक के आपके पैसे वापस आ जाएंगे into this account. Tell me a little bit more. मतलब I want to know, मैंने ये इंश्योरेंस होता है, right, ये मेरे को पता है, and that makes it safe. But exactly क्या प्रोसेस होगा? So suppose हांडा बैंक है, और हांडा बैंक ने बोल दिया कि भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, मैं तो लेके भाग गया. करेक्ट. तो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है. हांडा बैंक डूबने से पहले आपके डिपॉजिट का 1% और 2% DICGC को दिया है. इट्स लाइक बाइंग एनी अदर इंश्योरेंस, कि अब आग लग गया हांडा बैंक पे, इंश्योरर हैज टू गिव द मनी बैक. आई एज अ कस्टमर विल अप्रोच हांडा बैंक एंड से कि भाई तुम तो डूब गए,
and RBI will ensure that somebody at Handa Bank is talking to the customer to collect some details. नहीं तो बैंक की हाँ, मतलब कैसे भाग गया से मेरा मतलब नहीं, मान लो डूब गया, correct PMC वगैरह के अंदर हुआ, it has happened in banks. So there is somebody who is talking. आप अपने डिटेल सबमिट करते हो कि यार मेरा ये अकाउंट है, जो बैंक के पास भी है, ये मेरा 5 लाख तक के जो भी पैसे है, that you need to give into this account. ठीक है? अच्छा. ये सबसे कोलेट करेगा. कोलेट करके हांडा बैंक विल सेंड दिस लिस्ट टू DICGC, एंड DICGC का मैंडेट है कि विद इन 2 months आपके पैसे आर गिवन बैक टू द यूजर्स. अच्छा. एंड जो इंश्योर्ड अमाउंट है, दैट इज द इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख रुपीज. मान लीजिए आपने 4 लाख का FD किया एंड 10% आपका इंटरेस्ट बना, तो 4.5 लाख आपके 4.4 लाख इज इंश्योर्ड. बट आपने 10 लाख का FD किया, बट 5 लाख आएंगे, बाकी 5 लाख विल डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल PMC बैंक आपने बोला है कि PMC इज नाउ अक्वायर्ड बाय यूनिटी बैंक. जैसे बैंक डूबा था विद इन 2-3 months, जो 5 लाख तक के पैसे आ गए. नाउ सिंस PMC इज अक्वायर्ड बाय अ डिफरेंट बैंक, ऑल द ओल्डर डिपॉजिटर्स हैव गॉट सम 3 or 4 year का साइकिल जिसमें विथ सम फ्रीक्वेंसी द मनी इज कमिंग बैक. तो पैसा आ रहा है, बट इंश्योर्ड पैसा सबसे पहले आ जाता है, विथ इंटरेस्ट आ जाता है. ये पैसा थोड़ा सा लेट आता है. अच्छा. बट हैविंग सेड दिस, इन इंडिया नो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज डिफॉल्टेड एज ऑफ नाउ. PMC इज अ कोऑपरेटिव बैंक, एंड स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2 बैंक्स आते हैं, 3 बैंक है, द PSU बैंक्स, the SBIs, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNBs, द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFCs, ICICIs, Axis of the world, एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो आपके उत्कर्ष, शिवालिक, सूर्योदय. इस यूनिवर्स में कोई भी बैंक अभी तक डूबा नहीं है. एंड द क्लोजेस्ट दैट गॉट टू अ डिफॉल्ट वाज यस बैंक, जो बचा लिया गया था थ्रू इन्वेस्टमेंट थ्रू SBI. सो यू कैन बी सेफ, बट इंश्योरेंस जब है तो उसका यूज करो आप. ओके. सो ये जो इंश्योरेंस है, ये जो 3 टाइप के आपने बैंक्स बताए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर आपका प्राइवेट, पब्लिक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, एंड देन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देन कोऑपरेटिव. तो ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस है, बाय डिफॉल्ट सब बैंक पे लगता है कि सब बैंक पे नहीं लगता है? बाय डिफॉल्ट ऑल बैंक्स पे ये इंश्योरेंस है. अगर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरता फॉर 3 quarters इन अ रो, देन द RBI हैज द पावर टू टेक अवे द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक. सो द बैंक विल नॉट रिमेन अ बैंक इफ दे डिफॉल्ट ऑन दिस इंश्योरेंस. तो ये है बाय डिफॉल्ट. ओके. सो जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी ये होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स में भी है ये इंश्योरेंस, बट द प्रॉब्लम विद कोऑपरेटिव बैंक्स इज द चांस ऑफ डिफॉल्ट इज मच हायर. अच्छा. बिकॉज़ इंश्योरेंस है, पैसा मिल जाएंगे आपको, 5 लाख तक के पैसे मिल जाएंगे वो 2 महीने में, बट यू विल नीड टू गो थ्रू दैट पेन. हाँ, नहीं मतलब द इंश्योरेंस फैक्टर एग्जिस्ट विद ऑल बैंक्स. पता नहीं यार, मेरे को मे बी आई एम रॉन्ग कि कहीं कहीं पे मैंने वो एप्स के अंदर देखा है कि उनके ऊपर लगा रहता है कि अच्छा ये वाला इंश्योर्ड है, ये वाला इंश्योर्ड नहीं है. ऐसा नहीं होता है. सो NBFCs आर नॉट इंश्योर्ड. NBFCs वाले नहीं होते हैं. ओके. So NBFCs, so stable money पे, even though we have NBFCs like Bajaj Finance and Shriram Finance, and इनका एक credit rating होता है. So Bajaj for example is a AAA rated company. AAA मतलब ये जो आपके credit agencies है like CRISIL, CARE, ICRA, ये लोग एक NBFC को देख के उसका सेफ्टी बताते हैं. इसका सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये डूब जाए. अगर AAA रेटेड कंपनी है, मतलब इट हैज नियर 0 चांस ऑफ दैट NBFC गोइंग डाउन. तो आई थिंक इंडिया का हिस्ट्री देखोगे तो देयर इज परहैप्स बीन ओनली 1 AAA व्हिच इज द DHFL व्हिच हैज गॉन डाउन. सो द चांस इज मिनिस्क्यूल. Shriram has a credit rating of AA+, which again is a near 0 chance of that NBFC going down. Therefore हम हमारे ऐप में दे देते हैं the chance of giving deposits. But there are other NBFCs जो A rated है, BBB rated है, उनका हम दिखाते हैं. अच्छा, सो आप लोग ये फिल्टर करते हो अपने आप पे कि अच्छा हाँ कि कौन सी कंपनी का डालना है, कौन सी कंपनी का नहीं डालना है, ताकि so that decision is sort of taken by you guys कि कौन कितना safe है. Correct. First we curate and then we bring out the options with insurance or with extremely high degree of safety. And that is indicated on the app. अब ये अब साउथ इंडियन बैंक है तो कई जगह तो बैंक होगा या बैंक अगर नाम में नहीं है. करेक्ट. इज देयर अ वे फॉर मी टू आइडेंटिफाई व्हाइल यूजिंग द ऐप कि ये इंश्योरेंस वाला है, ये इंश्योरेंस वाला नहीं है? एब्सोल्युटली. तो हमारा जो बैंक कार्ड होता है ना, ऊपर लिखा रहता है अप टू 5 लाख रुपीस इंश्योर करके, देयर इज अ मार्क. अच्छा. एंड व्हेन यू गो इनटू द बैंक पेज आल्सो वी राइट इफ दैट इज इंश्योर्ड एंड इफ दैट इज नॉट इंश्योर्ड तो उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है.
So we believe in full transparency. Fair. So I think that wraps up broadly what I wanted to talk about with respect to कि ये इंश्योरेंस वगैरह कैसे क्लेम करते हैं, बिकॉज मेरे को उस प्रोसेस का कुछ आइडिया नहीं था. भगवान की दया से कभी कोई डिफॉल्ट में फंसा नहीं हूँ. जो डिफॉल्ट वगैरह हुए हैं जहां मैं फंसा हूँ वो मेरी अपनी ही गलतियों और एक्सपेरिमेंट्स की. People like you can experiment. That's the reason. So the idea is कि कोई भी नया फिनटेक ऐप वगैरह आता है, स्टेबल मनी इंक्लूडेड. तो मेरा पहला टेंडेंसी तो रहता है कि अच्छा मैं यहाँ जाके एक आध ट्रांजैक्शन करके देखता हूँ कि कितना स्मूथ है, कितना नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड एक्चुअली फिक्स्ड इनकम के स्पेस में बहुत सारी आजकल ये कंपनीज आ गई हैं जो कि टिल यू डोंट नो अबाउट इट लुक्स दैट कि अच्छा स्टेबल मनी ये 9% दे रहा है, ये दूसरा वाला ये 10 दे रहा है, ये तीसरा वाला ये 13 दे रहा है, ये चौथा वाला वो 16 दे रहा है. अब यार दोस्तों को या ऑफलाइन के अंदर 1.5% इंटरेस्ट, वो तो सबको पता है कि गड़बड़ है. बट यार वेबसाइट है, वेबसाइट ने $10 मिलियन पैसा उठाया है, ये कहाँ डिफॉल्ट करेगा वाला टेंडेंसी आ जाती है. सो one of the companies that I lost money in was asset leasing करके होता है. So if you will obviously know about it. So asset leasing करके products आते हैं where you are giving money to someone to buy those assets and they'll pay you back. Invoice discounting करके एक है. So I'm not saying that those are bad. They are brilliant products. I have investments in them, but I'm very well aware कि वो पैसा जो है वो कभी भी डूब जाएगा और वो डूब के फिर रिकवरी और इंश्योरेंस वगैरह का जैसा एफडी में होता है वो कोई ऑप्शंस. I think on that point, just to extend, but just remember there are no free lunches, right? And what is the safest instrument in the country is a government bond. कि government for Indians तो नहीं डूबेगा क्योंकि government print करके दे देगा आपको. And the safest thing in India trades at a 7.1%. And उसके ऊपर जो भी रिटर्न आ रहा है, because you are taking some kind of risk. चलो इंश्योरेंस आ गया, इन FDs, bonds में कुछ है, तो with increasing return comes increasing risk. तो just don't only look at the return, think of the risk as well. Typically आपको कोई 15% का प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि 4-5% का डिफॉल्ट चांस है. 20 ऐसा आप लोगे तो एक डूबेगा ही डूबेगा. आप जितना भी फिल्टरिंग कर लो, कुछ भी कर लो. So universe, this is bound to happen if you have enough and more data points. You look at this. Fair. It'll happen. यार कई जगह तो रेगुलेटर की वजह से दिक्कत हो जाती है. आई डोंट नो इफ यू फॉलोड द P2P पीयर टू पीयर लेंडिंग वाला स्पेस के अंदर ओवर द लास्ट 1 month आई नो हालत खराब हो गई. और P2P was fairly regulated. Big companies were working in it. मतलब some of the companies are IPO bound and but वो regulations के अंदर थोड़ा सा tweak हुआ. Now as a user I don't know whether the companies were violating those norms or were they pushing the envelope or whatever they were doing. But money has been stuck. और कर क्यों रहे थे? क्योंकि 12% मिल रहा है. इंस्टेंट लिक्विडिटी के साथ में 12% मिल रहा है. मतलब भाई ये भी होता है ना कि चलो मैं पैसा कहीं पे जाएगा, वो लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहेगा. इक्विटी में तुम 10 साल के लिए डालोगे 12% मिलेगा. आज डालूंगा और मेरे को अगले महीने मैं आज डालूंगा, परसों निकाल लूंगा, तो उसका प्रो रेटा पे अगर 12% तुम दे रहे हो तो रिस्क तो है. एंड दैट हैज लेड आउट. आई थिंक टू बी फेयर, regulator did not come up with new rules. Just reinforce the old rules. उन्होंने फिर से क्लैरिफाई किया in black and white now कि यार these rules means this. ये exactly you have to do this. हाँ, तो वो जो ग्रे एरिया था उसके अंदर लोग खेल रहे थे और फिर वो वो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है. तो तुम लोगों का प्लान है क्या कुछ कि मूविंग, सो जैसे एफडी से चालू किया, देन यू आर मूविंग ऑन टू द बॉन्ड्स एंड ऑल दैट, इनटू गेटिंग इनटू maybe the equity part of it, or maybe the asset leasing, invoice discounting, the other alternative investment category, etc. So I think the first thing is we do not want to get into riskier asset classes as of now, because there is a lot of trust that has been placed by our users. We now have around 1 million downloads on the app, 60,000-70,000 users who transacted. Every month we are doing close to 170-180 crores of FDs. One default would mean we're putting at risk all this business that we've painstakingly built and the trust of the customers. हाँ, वो तो भाई ब्लेम जो है अभी जैसे मेरे को तो
So what some of these apps do is they will have a third party. Say for example, I think Cred as an example, I think they'll use Liqui Loans as their back-end partner. So मेरे को तो क्रेडिट से मतलब है ना भाई, मैंने पैसा तो क्रेडिट को दिया है. करेक्ट. तो हमको वो थोड़ा सा रिस्कियर एरिया में नहीं जाना है. वी वांट स्टेबल मनी टू बी एसोसिएटेड विद सेफ प्रोडक्ट्स एंड सेफ मनी. I think we imagined a universe where risky products ke liye you'd have a different app, and for safer products you'd have stable money. We don't know what's going to change 3 years down the line, because journey jo is pe le jana is from a low risk, low return to reasonable risk, very high return products, maybe 3-4 years down the line. So I think the current focus for us is do things which are adjacent to FDs. FD hai, corporate bonds aega. We are thinking about launching gold mutual funds now. Again, given SGB is out of the way. And we want to do auxiliary products on the FDs itself. ये हमारे बहुत सारे customers हैं जिनके पास credit card है नहीं, but have invested very heavy sums on FDs, on stable money. So we are thinking of launching secured credit cards with really good reward benefits. We want to do FD ODs, we want to do SIP on FDs, we want to do FD RDs. तो FD पे पूरा stack बना लो and do things adjacent to FDs. Close. So that's how we are planning. I'm sure अगला प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तब क्रेडिट कार्ड लॉन्च करोगे तब बुलाना दे. So we'll do another of these sit down interviews then. So but before I wrap up for today, anything that you would like to recommend to our listeners, viewers? नाम, किताब का नाम. So I've read Jugalbandi, which is the story of Mr. Advani and Mr. Vajpayee, written by Vinay Sitapati, I guess. I've read Half Lion, again by the same author. Now I'm reading On the Second World War by Beaver. And on the investment side, I really like One Up the Wall Street by Peter Lynch. And now I'm reading a book by Ma Anand Sheila on Osho. Maybe the next time we meet, I'll give you some gossip there. Right. तो इसके लिए मैंने नॉन फिक्शन के अंदर ये बहुत बढ़िया पढ़ी थी. भुजिया बैरन्स करके एक है. About the story of Haldiram and stuff. That I really. I've also read the $1 billion startup on the Flipkart story, which is also has a lot of masala, apart from what I get from Saurabh. So fair. So thank you, Harish. Thank you for taking out all the time. And to our users, भाई साहब आए हैं, टाइम वाइम दिया है, तो कृपया करके इनका ऐप डाउनलोड कर ले. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. I will sign off here, and I hope I've earned the privilege of your time. Thank you.